Everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 23rd and 24th of March. Session will be quite interesting and important, students. In this video we will be talking about the 10th edition of the Raisina dialogue that was held in New Delhi. Then we will be talking about Kerala state that is established the India's first senior citizen commission. Next thing we will be talking about the 14th meeting of the experts working group on the counter terrorism that was held in New Delhi, and we will be talking about India's bioeconomy that has touched $165 billion in 2024, and there are many more students that will be beneficial in your learning, so stay tuned with us till the end. We upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning, students. Weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise are uploaded regularly to help you prepare better for the competitive exam. Also, if you are new to our channel, students, do subscribe to us. We are one stop solution for current affairs. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. With national affairs, students, 10th edition of the Raisina dialogue that was held in New Delhi from 17th to 19th of March. It was held where? It was held in New Delhi, and this event was jointly inaugurated by Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of New Zealand Christopher Luxon. Right, and we discussed this yesterday also, students. The theme of this event was Kala Chakra, People, Peace and Planet. This is the theme here for the 2025th edition of the Raisina dialogue that was held in New Delhi, and two individuals inaugurated it, two famous personalities, Prime Minister of India Narendra Modi and PM of New Zealand Christopher Luxon. Right, very important, students. Next, if we talk about this, during this Raisina dialogue, various leaders from Latvia, Nepal, Georgia, Ukraine, Thailand also took part in this event. Moving on. Next, if we talk about this dialogue, it has been held annually in Delhi since 2026, and there are multiple stakeholders here that includes your cabinet minister, local government officials, private sector leaders, media, academia and so on. And the 9th edition of the Raisina dialogue was held with the theme Chaturanga Conflict Contest P Corporate Create in New Delhi last year, and this was the 10th edition of this Raisina dialogue held in New Delhi with this theme here. Moving on, Kerala state established the India's first senior citizen commission, right? This is the India's first senior citizen commission that has been established in which state, and that became the first state to establish this. It is Kerala, right? This will ensure the protection of the rights, welfare, rehabilitation of the senior citizens in this state. Here, the main focus here is basically we can address the problems that are faced by the senior citizens. That includes your abuse, loneliness, and also here these senior citizens will be helped by providing them with advice and suggesting policies that will improve their well-being. If we talk about the Chief Minister of Kerala, who is the Chief Minister of Kerala? Pinarayi Vijayan. And here only remember there is a national park, that is Silent Valley National Park. Next, students, we are talking about the 14th meeting of the ADMM plus experts working group that was held on counter terrorism held in New Delhi. Right, so this is the 14th edition of Association of the Southeast Asian Nations Ministers Defense Ministers meeting, right? Association of Southeast Asians Defense Ministers meeting. So ADMM, right? So their meeting was held from 19th to 20th of March. This was held where? Location New Delhi, and in this India and Malaysia, it co-chaired this meeting. India
and Malaysia. These two countries co-chaired this meeting, and this is for the cycle 2024 to 2027. Correct? Take a note of this. Here you will be seeing various strategies will be enhanced, the various strategies will be developed, talked about that how we can enhance or how we can tackle the threat of terrorism, right? Next is Union Minister of State Dr. Jitendra Singh has launched Biosarthi and Bioeconomy report, that is India's bioeconomy has touched $165 billion in 2024. So Union Minister of State Dr. Jitendra Singh, he's our Union Minister of Science and Technology, and he has launched this Indian Bioeconomy report, IBER, that is Indian Bioeconomy report for 2025 was released, and this was released during the 13th anniversary celebration of BIRAC. What is this BIRAC? It is your Biotechnology Industry Research Association Council, right? So during their 13th anniversary celebration, this IBER, that is Indian Bioeconomy report, was released, and we have touched how much? We have touched $165 billion. Apart from this, he has also launched Biosarthi. This is a pioneering international mentorship initiative that will nurture the bio startups in India for 6 months, that will help them to grow, connect with industry leaders, and also help with them with the finance. Moving on, next is Government of India forms IMICF for fintech sector development. What is this IMICF? That is Interministerial Industry Committee on Fintech. This will address the challenges in the fintech sector and develop strategies for their long-term expansion. Here the committee will submit a detailed report within the 3 months of their first meeting that are outlining the key recommendations. Also here one more thing, remember students, that is important, and I want you all to remember that I forgot to tell you earlier, right, in the last report, that Assam became the first state in the country that has adopted the Bio E3 framework. Just remember this, I just remembered it, so I am mentioning out right there. Right, so coming back, in the Interministerial Industry Committee on Fintech, right, it was formed by the Government of India, and it is for the fintech sector development. Fintech sector is your finance and technology, right? To help this fintech sector grow, this IMICF was established. Next is MEITY Ministry. They have conducted the IWBDC, that is your Indian Web Browser Development Challenge. This will develop the indigenous web browser for India. Indigenous is basically in-house. That means our India's own web browser. We know that Google, Microfox, or your Chrome, they are not the browsers of our India, right? So here MEITY, they have also recently established a Indian Web Browser Development Challenge, where they are focusing on developing India's own web browser, and this will be done under the Atmanirbhar Bharat initiative. In this challenge, a total of 434 teams participated, and here you can see Johor Corporation won the first prize, Team Ping second, Team Ajna third, and Geo Vishwakarma special mention was provided to them. Moving on, next is international affairs students. India and Bolivia, they have strengthened the bilateral ties with the quick impact projects. So India will be helping to establish multiple quick impact projects in Bolivia, right? These quick impact projects will reflect a shared commitment for fostering economic growth and social inclusion, right? They will be related to your agriculture, your education, your healthcare, energy, culture, and many more. Next is banking and finance. IRDAI has appointed 5 new members to enhance the insurance advisory panel. So IRDAI, this is Hyderabad, Telangana based organization. They have appointed 5 new members, right? And these members are the experts from various sectors that will improve the regulatory decision and strengthen the insurance sector's overall framework. Who are these individuals? These are Shri M. Kumar, Shri Dinesh Kumar Khara, MS Vishakha Mulya, 4th is your Shri Nilesh Shah, and 5th Miss Alice Vedyan. So these are the 5 individuals that have been appointed here. Next is RBI data. Recently a data was released that ECBs are your external commercial borrowings. Their net inflow has surged over 2 times to $18.4 billion in the 10th month of FY24.
2025. So recently a state of the economy report was released by RBI. In their March bulletin they stated that the net external commercial borrowings, they have surged two times to $18.4 billion in the 10 months, that is from April to January 2025. Correct. It further showed these the external commercial borrowing registrations and disbursements reached 47.3 billion and 42.3 billion dollar respectively in the same time period. Correct. Take a note of this. Further, you can see here the net outflows as per their data. These external commercial borrowing, right, their outflow due to the principal repayment reached this amount and the net inflows reached this amount for FY20. Moving on to economy and business students, UK's Prudential PLC and HCL Group, they have announced a joint venture for the health insurance in India. We know that India is a very untapped market, still an untapped market for the insurance penetration, and target of IRDAI and Government of India is to provide insurance for all by 2047. Correct. So UK's Prudential PLC and HCL Group, they have announced a joint venture where they will be distributing the health insurance in India. Correct. And here you can see UK based Prudential PLC, a global financial service group, they announced their standalone health, they have announced their establishment of a standalone health insurance company in India with partnership based with Vama Sundarai Investment Private Limited. Next is AIBI, that is Association of Investment Bankers of India, and MBAN, that is your Merchant Bankers Association of Nepal. So they together signed an MOU that will strengthen the investment banking, right? So better investment banking solutions will be provided here. And from India, it is Association of Investment Bankers of India, the apex body of investment bankers in India. They signed this MOU with whom? With MBAN, that is Merchant Bankers Association of India. Correct. So here there will be professional development, capacity building programs will be there, best practices will be followed, and also this MOU will remain into effect for the next 3 years. Next is awards and recognition. Winners of the Sahitya Translation Prize 2024, a total of 22 Indian languages have been selected here. Correct. So take a note of this. It is your Executive Board of Sahitya Academy under the chairmanship of their president Madhav Kaushik. They have approved the selection of 22 books in the 22 languages for the Sahitya Academy Translation Prize during the meeting at Rabindra Bhavan in New Delhi. Right. And this year no translation prize has been declared in the Urdu language. Take a note of this. This Sahitya Academy, it is also known as the India's National Academy of Letters, that was initiated by the Government of India in 1954. Correct. Then if we talk about this Sahitya Translation Prize, right, this prize, it relates to the publishing first published during the 5 years before the translation between. Awards were given in 22 languages, which you can read the PDF from our course, students, and you will get all the results there. Next is Cordoba, right, and Fortaleza and Greater Manchester. They were honored with the 2025 Partnership for the Healthy Cities Summit in France. I repeat, Cordoba of Argentina, Fortaleza of Brazil, and Great Manchester of UK, they were honored with the 2025 prize for Partnership for Healthy Cities Summit. That was held in Paris, France. So where was this Healthy Cities Summit held? It was held in Paris, France. And who were honored here with the 2025 Partnership for Healthy Cities? Right, it is 3 cities here that you can see, and this was for these cities significant efforts for preventing the non-communicable disease and injuries in those areas. Next is appointment and resignation. Tunisian President Kais Saied has appointed Sara Zafrani Zenzri as their new Prime Minister. As you can see here in the picture here, Tunisia's Prime Minister or Tunisia's President Kais Saied dismissed the Prime Minister Kamel Madouri and has appointed Sara Zafrani as their new head of government. Right, and she became the second woman to hold this position. Next is Netumbo Nandi Nadiawa, right, as you can see here in the picture, has been sworn in as the Nambia's first female president. Right, take a note of this, first female president and 5th president of the economy. Correct. So she succeeded Nangolo Umba to be the new prime minister, new president, right, and the first female president of Namibia. Next
Next is Bollywood actor Ayushmann Khurrana became Fit India icon, right? Ayush Khurrana, we know, very famous actor, correct? And recently him was named as the Fit India icon by Union Minister Mansukh Lakshman Bhai Mandviya ji, our Union Minister of Youth Affairs and Sports. This was during the inaugural ceremony that was held of Fit India Carnival. That was a 3-day event here, right? So for Fit India icon, who has been appointed as the ambassador or icon here for Fit India, Ayushmann Khurrana. Next is acquisition and merger, students. Bain Capital will be acquiring 18% stake in the Manapur Finance for 4,385 crore rupees. I repeat, Bain Capital, this is a global private investment firm, and they have announced their agreement or that they will be acquiring 18% stake on fully diluted basis in Manappuram Finance, and it will be for 4,385 crore rupees. Next is environment, students. Uniala Kerala-lenensis, right? Uniala Kerala-lenensis, right? This is a new plant species identified in Kerala's Agasthyamala Biosphere Reserve, right? So in Agasthyamala Biosphere Reserve, that is in Trivandrum, Kerala, a new plant species has been discovered, as you can see it in the picture here, Uniala Kerala-lenensis, correct? Next is important day, students. World Poetry Day observed on 21st of March. This day is observed annually across the globe to promote linguistic diversity and support the endangered languages through poetry, right? This year it was the 26th edition of the day that was observed, and there is a theme, poetry as a bridge for peace and inclusion. First time this day was observed in the year 2000. Next, International Navroz Day observed on 21st of March. This day is observed basically to promote cultural exchange, peace, solidarity and good neighborliness. And this day aims to foster cultural diversity and friendship among the people and communities worldwide. Next is your World Down Syndrome Day observed on 21st of March. This day is basically to advocate for the rights, inclusion and well-being of the people with the Down syndrome. This year it was the 14th edition of this day that was observed, and there is a theme, improve our support system. This is the theme here for the World Down Syndrome. And here yellow and blue ribbon, they are awareness for the, or they represent awareness for the Down syndrome. Next is your International Day of Forest observed on 21st of March, and this day is observed to create awareness and for the protection of the forest, the trees there, the ecosystem there. There is a theme here, students, forest and foods. Forest and foods, this is the theme here. Next is World Glacier Day observed on 21st of March. This day is observed basically to create awareness about the melting of these glaciers, right? Basically to protect these glaciers and also to address the climate change, to protect our ecosystem, to protect the fresh water supplies and also to protect the stability of the climate, right? This is the day observed on 21st of March. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be beneficial for your learning. First question is, identify the company that recently signed a memorandum of understanding with GRSE, that is Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, for 5 years to strengthen India defense and aerospace capabilities. It is Apollo Micro Systems. This collaboration will address the need of the present and the future need of the Indian Defense Forces. Next, who has been recently selected as the pilot for the Axiom 4 mission, becoming the first Indian astronaut to go to the International Space Station on a private mission. So, Group Captain Subhanshu Shukla was appointed as the pilot for the Axiom 4 mission, and he became the first Indian astronaut to go to the International Space Station on a private mission. And this Axiom space mission is of NASA. Next, mention the defense system that DRDO successfully conducted 3 consecutive flight trials from Integrated Test Range Chandipur, Odisha in Feb 2025. It is very short range air defense system. These tests were conducted against high speed targets flying at a very low altitude. Next, the Indian Navy launched its 9th ammunition cum torpedo cum missile barge called Landing Ship Ammunition 23 at Suryadipta Projects Private Limited in Thane, Maharashtra.
This ACTCM barge was designed and constructed by which organization? It was by MSME Shipyard in collaboration with the Indian Ship Designing Firm and Indian Shipping Registry or Indian Register of Shipping. Next, identify the navigation satellite that was launched by the Japan Aerospace Exploration Agency JAXA using their HC rocket from the TNSC in Japan. So, name that navigation satellite. It is Michibiki 6. Next, and one more thing, students, here remember, question can also be asked, this S3 rocket is of which organization? It is of Japan country and the organization here is JAXA. Next is, during the 92nd USA spacewalk, which astronaut set the new record of a total spacewalk time by women? She is Sunita Williams and she was recently brought back to from International Space Station to Earth, right? And along him, who was the other astronaut? Butch Wilmore. It was brought back by Crew 9 mission and it was Dragon capsule that brought them back here. Next, identify the super application that was recently introduced by the Ministry of Railways to provide one-stop solution for Indian Railways services. It is Swarel. It is Swarel. Next, the latest version of the finite element analysis of structure, that is FEAST software, was launched by Dash at the 8th National Finite Element Developers Meeting at the IIT Hyderabad in Telangana. It is by ISRO, Indian Space Research Organization. Next is, how many MQ-9B Predator drones were procured from General Atomics USA as approved by the Cabinet Committee on Security chaired by Prime Minister Narendra Modi for a strategic defense projects in Feb 2025. It is 31 MQ-9B Predator drones that were procured here. And this deal includes 16 Sky Guardians and 15 Sea Guardian variants. Next, name the rocket that was launched by the Russia from Plastek Cosmodrome to deploy military satellites into orbit. It is Soyuz 2.1V rocket. Next, United States Navy successfully tested the high energy laser with integrated optical dazzler and surveillance system, that is Helios system, using the Algerburg class guided missile destroyer. Question asked is, this Helios system was developed by whom? It was developed by Lockheed Martin Group. Next, in Feb, Spin launched, they developed an innovative method of Dash to launch satellites into the low Earth orbit without traditional rocket fuel. So in Feb, this Spin launch, this is a traditional method which is using the centrifugal force in order to rotate the satellites at a very high speed and then launch it into the space. So this is an innovative method developed by the electric powered kinetic launch mechanism. Next, identify the company that recently delivered their latest anti-tank 4 weapons to the Indian Armed Forces in February month. It is Saab AB. It is Sweden-based company. Next, in Feb, the Shenzhou 19 crew on China's Tiangong space station successfully produced oxygen, right? And this was done through artificial photosynthesis. Quite an interesting and important question. So using artificial photosynthesis, oxygen and rocket fuel were produced at the Tiangong space station, that is the space station of China. Next is, which company successfully completed the 29th New Shepard flight in Feb, simulating lunar gravity for the first time? It is Blue Origin. Take a note of this, and this Blue Origin is of Jeff Bezos. Next, name the drone carrier warship that was commissioned by Iran for the first time into the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy in the Persian Gulf. So, what is the name of that drone carrier? It is Shahid Bagheri. Shahid Bagheri. This is the name of the drone carrier and it is of Iran. Next, identify the cryogenic engine that ISRO successfully carried out the ignition trial for the upper stage of launch vehicle Mark 3 in Feb 2025. It is CE-20. Take a note of it. And as per ISRO, the multi-element igniter within the engine has successfully simulated the engine ignition in the vacuum condition of space. Next, identify the organization that recently collaborated with the CNSA, that is China National Space Administration, to include Pakistan's first lunar rover in the China's Chang'e mission scheduled for 2028. So, which is that organization that collaborated with CNSA? It is the Space and Upper Atmosphere Research Commission of Pakistan. Next, which Indian institute collaborated with ISRO's Inertial System Unit to design and develop semiconductor chips, that is indigenous RISC-V
controller for space application by the name IRIS. That is indigenous RISCV controller for space application, and it was developed in Feb, which is at IIT. It is Indian Institute of Madras. Next, in Feb, SpaceX Falcon 9 rocket launched a batch of 21 Starlink satellites. It was launched into the low Earth orbit, marking a significant step in expanding its satellite internet network. And in India, they are partnering with Airtel and Jio to provide internet services using the Starlink. Next, in Feb, Indo-Russian Rifles Private Limited, they have delivered 40,000 units of what? They delivered the 40,000 units of AK-203 assault rifles to the Indian Army, and these rifles will be delivered, or they will be manufactured at the Korwa Ordnance Factory, that is in Amethi in Uttar Pradesh. Next, which organization partnered with the Aeronautical Development Agency to develop high strength, high toughness, special grade steel, that is MDN 100 for aerospace applications? It is Mishra Dhatu Nigam Limited. Moving on, Indian ship design firm along with which organization designed and built the Indian Navy 8th missile cum ammunition barge launched on 14th of Feb in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. So which is that Indian ship design firm? It is IRS, Indian Register of Shipping. Next, identify the organization that developed and tested India's 4th generation deep ocean submersible Matsya 6000 under the Samudriyan project in Feb 2025. It is National Institute of Ocean Technology, that is NIOT. Next, identify the spectrograph that was used by the scientists at the Physical Research Laboratory to discover the exoplanet. This is the exoplanet in Feb 2025. So, name that spectrograph. It is which spectrograph that was used here. So, it is your Advanced Radial Velocity All-Sky Research 2 that was used to discover this exoplanet. Next, name the new communication satellite that was launched by China using the Long March 3B carrier rocket into geosynchronous transfer orbit to replace China Sat 10. So, name that communication satellite. It is China Sat 10R. So, China Sat 10R will be replacing China Sat 10. Next, which mission data was used to generate the first ever detailed geological map of the moon's south pole in Feb 2025? It is Chandrayaan 3. Take a note of this. First ever detailed geological map of the moon's south pole. Moving on, identify the missile that was jointly tested by DRDO and Indian Navy at the ITR Chandipur, Odisha in Feb 2025. It is Naval Anti-Ship Missile Short Range. Next, which country won the second edition of the ICC Under-19 Women's T20 World Cup for the second consecutive time by defeating South Africa in Malaysia? So, this is our country, India, that has won the ICC Under-19 Women's T20 World Cup, and this was the second edition of this event. We defeated South Africa in the finals, and the final event was held where? It was held in Kuala Lumpur, Malaysia. Next, who recently won the 87th Tata Steel Chess Masters 2025 trophy by defeating world chess champion D. Gukesh, that was held in Netherlands? So, R. Pragnanda, right, has recently won the 87th edition of the Tata Steel Chess Masters Trophy 2025, and he became the first Indian chess player since Vishwanath Anand in 2006 to win the Tata Steel Masters title. Next, find out the Indian player who has announced the retirement from all the forms of cricket, making the final appearance at Ranji Trophy for West Bengals against Punjab. So, Vridhaman Shah has taken retirement recently. Next, which team recently won the first ever title of the Men's Hockey India League 2024-25 held in Odisha by defeating Hyderabad Tufans? So, Sarachi Raha Bengal Tigers, they have recently won the first ever title of the Men's Hockey India League by defeating Hyderabad Tufans by 4-3 in the finals that was held in Odisha. Next, Shimona Halep, a two-time Grand Slam champion and former world number 1, announced her retirement from professional tennis in Feb 2025. Which country did she represent? She represented Romania, right? And in 2017, she became the world's number 1 Women's Tennis Association ranking, or she became the number 1 in that ranking. Next, in Feb, Marcelo Vieira da Silva Jr., known as the Marcelo, announced his retirement from professional football. He was a former
Real Madrid and dash defender, right? He used to play for Real Madrid, correct? And he belongs to Brazil. Real Madrid is the name of the football club. Next, which country topped the medal tally at the 2025 Para Archery Asia Cup in Bangkok, Thailand by winning 6 gold medals? So our country India has topped the medal tally at the 2025 Para Archery Asia Cup in Bangkok, Thailand. Next, who recently won the singles title at the 4th edition of the Mumbai Open 2025 Women Tennis Association 125 event held in Mumbai by defeating Mananchaya, right? So, Jill Bilen Takeman has won it. Next, name the former Sri Lankan captain who announced his retirement from international cricket in Feb 2025. So, Dimuth Karunaratne has recently, he's the former Sri Lankan captain who announced his retirement. Next, who won the men's single title at the 5th edition of the Chennai Open ATP Challenger held in Chennai, Tamil Nadu? So, Kriyan Jacquet has recently won the men's single title at the 5th edition of the Chennai Open ATP Challenger held in Chennai, Tamil Nadu. Next, identify the country that topped the medal tally at the 9th Asian Winter Games held in Harbin, China from 7th to 14th of Feb. So, it is China that has topped the medal tally here. Next, which country has won the 4th edition of the Badminton Asia Mixed Team Championship by defeating China in the finals on 16th of Feb? It is Indonesia. Next, when will the inaugural Olympic esports games take place in Riyadh, Saudi Arabia as announced by International Olympic Committee on 11th of Feb 2025? So, these games are scheduled to take place in 2027. Next, which of the following statements are correct with respect to 38th edition of the National Games? If we look at the options here, option A and C are right here. Right? B is wrong. B is saying Maharashtra secured the top position with a total of 121 medals including 68 gold, 26 silver and 27 bronze. Is it correct? No. Maharashtra secured the second position here. Correct? Take a note of this. And who secured the top position here? It is Survey Sports Control Board. They secured the top position in the 38th edition of the National Games with 121 medals in which there were 68 golds, right? And 26 silver and 27 bronze. So instead of Maharashtra, it should be SSCB. They secured the first position. Maharashtra was on the second position here with 201 medals, but they won 54 gold. Next, who won the men's title at the 2025 Asian Snooker Championship held in Qatar by defeating Amir Sarkosh? So Pankaj Advani, right? They have won the men's title at the 2025 Asian Snooker Championship. Next, mention the country that topped the medal tally by securing 5 gold, 2 silver and 1 bronze at the 2025 Archery Asia Cup World Cup Ranking Tournament Stage 1 that was held in Bangkok, Thailand in Feb 2025. So it is our country, India. Next, who was appointed as the chairman of the ad hoc committee formed by the Indian Olympic Association to replace the Boxing Federation of India on 24th of Feb 2025? So, Madhukant Pathak has appointed as the chairman of the ad hoc committee formed by Indian Olympic Association. This is our homework section. First is which state will be renaming Karnataka will be renaming the Bengaluru City University after whom to honor him. Second question, recently Ajay Devgan, right, the famous actor, he released a AI driven media company. What is the name of that company? Third question, recently Swalambhini, what is this Swalambhini, who launched it and what is the initiative, why this Swalambhini was launched? Correct. Next, fourth question, tell me recently which is the 58th Tiger Reserve of India and 9th Tiger Reserve of Madhya Pradesh. And fifth question, students, recently a satellite was launched by Assam state, right? What will be the name of that satellite that will be launched by Assam? Name that satellite. Correct. So these are your 5 homework questions, students. I need maximum to maximum participation from all the students in this video. स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 23 और 24 मार्च के. स्टूडेंट्स हम बात करेंगे 10वें एडिशन ऑफ राइजीना डायलॉग की जो कि न्यू दिल्ली में हुआ. देन केरला ने अभी इस्टेब्लिश किया इंडिया का पहला सीनियर सिटीजन कमीशन को, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन अभी 14th मीटिंग हुई काउंटर टेररिज्म ग्रुप की, जहाँ पे बात की जाएगी कि कैसे हम टेररिज्म को रोक सकते हैं.
राइट, एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। देन नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे बायोसारथी एंड बायो इकोनॉमी रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया, जो बताता है इंडिया की बायो इकोनॉमी $165 बिलियन टच कर गई है 2024 में। एंड मैनी मोर न्यूज स्टूडेंट्स रहेंगी जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, तो एंड तक बने रहिए स्टूडेंट्स। हम डेली सुबह 5 बजे अपनी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देते हैं। वीकली करंट अफेयर्स मंथली एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किए जाते हैं, जिससे आपके लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हमारे साथ तो सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सभी के साथ एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर्स पे। हम बात करेंगे 10वें एडिशन ऑफ राइजीना डायलॉग की, जो कि अभी न्यू दिल्ली में था। 17 से लेके 19 मार्च तक ये हमें देखने को मिला। इसको इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट, एंड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्जॉन के द्वारा ये यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आए थे, राइट। देन इन्हीं के द्वारा यहाँ पे जो ये इवेंट था राइजीना डायलॉग, ये 10वां एडिशन था। इसकी थीम क्या थी? कला चक्रा, पीपल, पीस एंड प्लैनेट, ये इसकी थीम थी, याद रखेंगे। इसको याद रखेंगे। इस डायलॉग को होस्ट किया गया था राइजीना आइडिया स्पॉट इन पार्टनरशिप विद फर्स्ट पोस्ट के द्वारा, जो कि इंडिया का एक इंटरनेशनल प्रीमियर न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे ऑफ न्यूजीलैंड इंडिया में आए थे, कई सारे MOUs भी यहाँ पे साइन होते हुए हमें दिखे थे, जो कि इसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल था इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइजीना डायलॉग की। 2016 से हर साल ये न्यूज़ दिल्ली में हो रहा है, राइट। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्राइवेट सेक्टर लीडर्स, मीडिया, अकेडमी, इन सब का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर केरला वो पहली स्टेट बनी जो इस्टेब्लिश करेगी सीनियर सिटीजन कमीशन को, राइट। केरला सीनियर सिटीजन कमीशन यहाँ पे बिल पास किया गया है, जो कि केरला वो पहली स्टेट बन जाता है फिर सीनियर सिटीजन कमीशन को लॉन्च करने के लिए। यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई, उनके वेलफेयर को लेके बात की गई, उनकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर बात की गई, राइट, एंड उनको सेफली वो रह सके, उनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो सके, उनको जो अब्यूज़ होता है उनके खिलाफ उसको ऊपर काम किया जा सके, उनकी लोनलीनेस को दूर किया जा सके एंड उनको एडवाइस दिया जा सके कि कैसे वो अपनी वेलबींग इंप्रूव कर सकते हैं अलग अलग पॉलिसी से, उसके बारे में उनको अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये कमीशन बिठाया जाएगा। इसी के साथ साथ केरला के चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? पिनरई विजयन। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, याद रखेंगे, जो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं 14th मीटिंग ऑफ द एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, राइट, प्लस ये एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप था जिसको काउंटर टेररिज्म के ऊपर ये मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, कि कैसे हम अलग अलग इनिशिएटिव्स ला सकते हैं, राइट, जिससे हम जो टेररिज्म है उसको रोक सकते हैं। फिर यहीं पे याद रखेंगे इस मीटिंग को इंडिया एंड मलेशिया के द्वारा को चेयर किया गया था। ये 2024 से लेकर 2027 तक की मीटिंग है। इससे पहले 21 से 24 तक की मीटिंग म्यांमार एंड रशिया के द्वारा को चेयर की गई थी। एंड ये 14th मीटिंग है एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग की, राइट। मेन फोकस रहेगा कि कैसे हम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बना सके ताकि टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म को यहाँ पे रोका जा सके। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया बायोसारथी एंड बायो इकोनॉमी रिपोर्ट, जो कि इंडिया की बायो इकोनॉमी टच कर गई है $165 बिलियन इन 2024। देखो,
बायो इकोनॉमी ग्रो करेगी, राइट, बायो इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी ग्रो करेगी, नए नए रोबोट्स देखने को मिलेंगे। वो सिर्फ रोबोट्स नहीं, बायोटेक्नोलॉजी में रोबोट्स नहीं आ जाते, बट बायो एनर्जी, आपके नैनो पार्टिकल्स आ जाते हैं, आपकी मेडिसिन से रिलेटेड आ जाता है, मेडिकल सेक्टर आ जाता है, राइट, प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, आपके अलग अलग मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं, राइट, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा सकता है। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है एंड इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, करेक्ट। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है $165 बिलियन टच कर गई है। इसी के साथ साथ इनके द्वारा किनके द्वारा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा बायो सारथी लॉन्च किया गया, जो कि एक इंटरनेशनल मेंटरशिप इनिशिएटिव है, जो कि नर्चर करेगा बायोटेक स्टार्टअप्स को 6 महीनों के लिए, उनको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए, मेंटरशिप प्रोवाइड कराएगा, फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा एंड मैनी मोर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो कि है इंटर मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्री कमेटी ऑन फिनटेक। ये कमेटी क्या है, जो भी फिनटेक सेक्टर, फिनटेक क्या होता है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, इनको मिला के जो कंपनीज हो गई, राइट, उनको जो भी स्ट्रेटजीज बनानी है, उनको जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, चाहे वो मेंटरशिप हो गया, चाहे मार्केटिंग हो गया, चाहे कोई फाइनेंस की दिक्कत आ रही है, तो उनको लॉन्ग टर्म में एक्सपेंशन में हेल्प करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ये इंटर मिनिस्टीरियल इंडस्ट्री कमेटी ऑन फाइनेंस इस्टेब्लिश की गई, ताकि फिनटेक सेक्टर को यहाँ पे ग्रो किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं MEITY, इन्होंने कंडक्ट करा इंडियन वेब ब्राउजर्स डेवलपमेंट चैलेंज को। ये डेवलप करेगा इंडिजीनियस वेब ब्राउजर, इंडिया का खुद का, मतलब इंडिजीनियस मतलब हमारा इन हाउस, हम इंडिया खुद अपना एक वेब ब्राउजर डेवलप करेंगे, जैसे हो गया फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, एज हो गया। ये क्या है, ये इंडिया के वेब ब्राउजर्स नहीं है, इंडिया चाहता है कि हम अपना खुद का वेब ब्राउजर्स यूज़ करें, लोग उसको यूज़ करें, ताकि इंडिया का जो डाटा है वो इंडिया के इंडिया में भी रह सके। एंड कहीं ना कहीं AI आएगा तो बाहर का डाटा लेगा, ट्रेन करेगा, हमारा डाटा बाहर जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसको अवॉइड करने के लिए इंडिया चाहता है कि क्यों ना हम अपना खुद का एक इन हाउस वेब ब्राउजर बनाएं, जो कि एट पार रहेगा विद वेरियस वेब ब्राउजर्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इसी के लिए यहाँ पे ये इनिशिएटिव था, 434 टीम्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। पहला प्राइज रहा जोहो कॉर्पोरेशन का, सेकंड रहा टीम पिंक का, थर्ड रहा टीम अंजना का एंड स्पेशल मेंशन रहा जियो विश्वकर्मा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर इंटरनेशनल अफेयर्स पर। इंडिया एंड बोलिविया, इन्होंने स्ट्रेंथन किया अपने बायलैटरल ट्राइज विद क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। इंडिया बोलिविया में कई सारे क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करेगा, जो कि आपकी हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड रहेंगे, जो कि एक दूसरे की कंट्रीज़ में टाइज जो रिलेशन है उसको भी ग्रो करने का काम करेंगे। मूविंग ऑन, बैंकिंग एंड फाइनेंस पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। अभी IRDAI, जो कि है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने 5 नए मेंबर्स अपॉइंट किए हैं टू एनहेंस द इंश्योरेंस एडवाइजरी पैनल। IRDAI कहाँ पर है, ये हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड रहेगा एंड यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर्स में, राइट। और ये जो 5 मेंबर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, ये अलग अलग मेंबर्स अलग अलग सेक्टर्स से रहेंगे, ये ताकि साथ में मिलकर यहाँ पे रेगुलेशंस लाई जा सके ऑफ इंश्योरेंस इन वेरियस सेक्टर। 5 मेंबर कौन है, श्री M कुमार, श्री दिनेश कुमार खारा, MS मिस विशाखा, श्री नीलेश शाह, मिस LS वैद्यान, राइट। ये वो 5 इंडिविजुअल्स यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, RBI का भी एक डाटा रिलीज़ किया गया है, उनके द्वारा स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई। स्टेट ऑफ इकोनॉमी ये रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ की गई, जो बताती है कि एक्सटर्नल जो कमर्शियल बोरोइंग है, एक्सटर्नल कमर्शियल जो बोरोइंग है, उसका जो नेट फ्लो है वो 2 टाइम से बढ़ गया टू $18.4 बिलियन इन द 10th मंथ ऑफ FY25, राइट। अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 का डाटा देखें तो जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है वो 2 टाइम बढ़ गई है टू $18.4 बिलियन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। यूके के प्रूडेंशियल PLC, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एंड HCL ग्रुप ने भी एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में इन इंडिया में। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस में जो भी इंश्योरेंस सेक्टर का जो काम है ना इंश्योरेंस का, इंडिया में अभी वो अच्छी तरह से लोगों का पहुंचा नहीं है पूरे लोगों तक, राइट। अभी बहुत ऐसी अनटैप्ड मार्केट है जहाँ पे हम इंश्योरेंस पहुँचा सकते हैं एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस इंडिया में अभी नहीं ले रखा है, राइट। तो एक इवन अगर आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड IRDAI का एक टारगेट है कि हम इंश्योरेंस फॉर ऑल ला सकें 2047 तक, राइट। तो इसी को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए यूके की भी प्रूडेंशियल PLC एंड इन्होंने HCL ग्रुप के साथ टाइप करके जॉइंट वेंचर बनाया कि हम हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर काम करेंगे इंडिया में। नेक्स्ट आ जाते हैं AIBI, ये है एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया से हो गई एंड MBAN हो गई मर्चेंट बैंकर्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल। तो इंडिया और नेपाल के बीच में ये MOU साइन किया गया ताकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को बढ़ावा देंगे, ताकि पर्सनली हम यहाँ पे डेवलपमेंट ला सकें, हम लोगों का
फंड मैनेज कर सकें, लोगों को इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा सके, उनको गाइड किया जा सके कि कैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। इवन अगर आपको याद हो तो फरवरी 2025 में जो FDI की लिमिट थी इंश्योरेंस सेक्टर में, इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको 75% थी वो पहले, जिसको बढ़ा के अब 100% कर दिया गया। सॉरी 74% थी, जिसको अब 100% कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकग्निशन पे। हम बात करेंगे साहित्य अकेडमी अवार्ड या फिर विनर्स ऑफ साहित्य ट्रांसलेशन प्राइज 2024। तो टोटल 22 इंडियन लैंग्वेजेस में यहाँ पे इनको अवार्ड दिया गया है। आप PDF में देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे विनर्स रहे इस अवार्ड के, राइट। तो 22 टोटल 22 इंडियन बुक्स इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस में यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया, राइट। एंड दिस ईयर नो ट्रांसलेशन प्राइज इन उर्दू लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज में कोई भी ट्रांसलेशन प्राइज यहाँ पे नहीं था। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉर्डोबा, फोर्ट लाजा एंड ग्रेट मैनचेस्टर। ये 3 वो सिटीज़ हैं जिनको 2025 के पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट में सम्मानित किया गया, जो कि पेरिस फ्रांस में हुई थी। ये कॉर्डोबा का है अर्जेंटीना में, फोर्टलेजा का है ब्राज़ील में एंड ग्रेट मैनचेस्टर UK में है। इनको ऑनर किया गया 2025 के पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट से पेरिस फ्रांस में। दिस इज़ फॉर द सिग्निफिकेंट एफर्ट्स इन प्रिवेंटिंग द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड इंजरीज। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के ऊपर। ट्यूनीशियन प्रेसिडेंट कायस साइद, इनको अपॉइंट किया गया, इन्होंने अपॉइंट किया सारा जाफरानी ज़ंजरी को एज देयर न्यू प्रेसिडेंट, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। ये नई यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट किया, नई प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई हैं। टेक अ नोट ऑफ दिस, ठीक है। नॉट प्रेसिडेंट, मैं फिर से कलेक्ट कर रहा हूँ। ट्यूनीशियन प्रेसिडेंट ने कायस साइद ने इनको अपॉइंट किया सारा जाफरानी ज़ंजरी को एज द नया प्राइम मिनिस्टर। ये सेकेंड वीमेन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं ट्यूनीशिया की। नेक्स्ट आ जाते हैं नितुम्बू नांदी नादियाविच, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये नामीबिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं। ये सक्सीड करेंगी किनको? नांगोलो मुम्बा, राइट। तो पहली फीमेल प्रेसिडेंट नामीबिया की कौन है? नितुम्बू नांदी नादियावा। नेक्स्ट आ जाते हैं बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना। ये वो एक्टर बने जिनको भी आइकन अपॉइंट किया गया है फिट इंडिया का, राइट। फिट इंडिया कार्निवल था, 3 दिन का इवेंट था जहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई फिटनेस के ऊपर। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पे। बेन कैपिटल, ये एक USA की ग्लोबल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म है। इन्होंने 18% स्टेक बाय किया है मन्नापुरम फाइनेंस में 4,385 करोड़ की लागत से। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर स्टूडेंट्स। उनियाला केरलाना नेनेसिस, ये एक नई प्लांट स्पीशीज़ है जो कि अभी केरला के अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर में डिस्कवर की गई, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। मूविंग ऑन, इंपॉर्टेंट डेज पे आते हैं। वर्ल्ड पोइट्री डे 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है पोइट्री के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, राइट। पोइट्री एक फॉर्म ऑफ आर्ट है जो कि डिफरेंट कल्चर को, लैंग्वेज को, जनरेशन को कनेक्ट करती है। इस बार इसका 26वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। इसकी एक थीम रहेगी पोइट्री एज अ ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल नवरोज डे। ये 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कल्चरल एक्सचेंज, पीस, सॉलिडेरिटी, गुड नेबरहुड्स एंड सो ऑन, राइट। बेसिकली फ्रेंडशिप एंड पीस को प्रमोट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 मार्च को। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो डाउन सिंड्रोम है उसके बारे में एडवोकेट किया जा सके, उसके राइट्स के बारे में, राइट, एंड लोगों को अवेयर कराया जा सके अबाउट दिस डाउन सिंड्रोम। 14th एडिशन इसका हमने ऑब्जर्व किया। इसकी एक थीम रहेगी इम्प्रूव आवर सपोर्ट सिस्टम्स एंड येलो एंड ब्लू रिबन यहाँ पर आपके सिंबल रहेंगे डाउन सिंड्रोम के। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है फॉरेस्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, ट्रीज़ को कंजर्व करने के लिए, यहाँ के इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम रहेगी फॉरेस्ट एंड फूड्स, ये यहाँ पे थीम रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड ग्लेशियर डे। 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो ग्लेशियर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट। जो इकोसिस्टम बना हुआ है वहाँ पे ग्लेशियर्स का, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, फ्रेश वाटर सप्लाईज को प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड जो राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी बदौलत जो हमारा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है गर्मी का पिघलते हुए ग्लेशियर्स पे, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया गया। सो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा।
किनको अभी सेलेक्ट किया गया पायलट फॉर पायलटिंग एक्सियोम 4 मिशन, एंड ये पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट्स बने टू गो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन अ प्राइवेट मिशन। तो ये है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट, मेंशन द डिफेंस सिस्टम, जो कि डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। 3 कॉन्जिक्यूटिव फ्लाइट स्टाइल किए गए फ्रॉम आईटीआर चांदीपुर ओडिशा। तो वो कौन सा एयर सिस्टम रहेगा? वो है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने लॉन्च किया इट्स 9th एम्यूनेशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल बार, जिसका नाम है लैंडिंग शिप एम्यूनेशन 23 एट सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इन थाने महाराष्ट्र। ये जो ACTCM बार्ज है, इसको डिजाइन किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है किसके द्वारा? MSME शिपयार्ड के द्वारा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेविगेशन सैटेलाइट, जो कि लॉन्च की गई बाय JAXA जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यूजिंग द H3 रॉकेट फ्रॉम जापान। तो ये H3 रॉकेट भी जापान के JAXA का ही है, राइट। तो क्या नाम है उस सैटेलाइट का, नेविगेशन सैटेलाइट का? वो है मिचिबिकी 6। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द 92nd US स्पेस वॉक, किस एस्ट्रोनॉट ने अभी एक रिकॉर्ड सेट किया ऑफ द टोटल स्पेस वॉक टाइम बाय अ वीमेन? तो ये है सुनीता विलियम्स, एंड ये 9 मंथ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे थी अलॉन्ग विद बुच विल्मोर। इनको वापस लाने के लिए जो मिशन यूज़ किया गया वो है क्रू 9 मिशन। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल को यूज़ किया गया था इनको वापस लाने के लिए, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सुपर एप्लीकेशन, जिसको अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा, ताकि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि जो भी इंडियन रेलवेज की सर्विसेज हैं वो यहाँ से एक्सेस की जा सके। तो क्या नाम रहेगा इस एप्लीकेशन का? वो है स्वरेल। नेक्स्ट, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस स्ट्रक्चर फीस सॉफ्टवेयर, इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया 8वें नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स मीटिंग के द्वारा एट IIT हैदराबाद इन तेलंगाना। नेक्स्ट आ जाते हैं, कितने MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स को भी प्रोक्योर किया गया जनरल एटॉमिक्स के द्वारा एज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेयर की गई थी। तो कितने MQ-9B ड्रोन्स को प्रोक्योर किया गया फ्रॉम जनरल एटॉमिक्स? तो वो है 31 ड्रोन्स को यहाँ प्रोक्योर किया गया, राइट। 16 स्काई गार्डियन ड्रोन्स रहेंगे, 15 आपके सी गार्डियन ड्रोन्स रहेंगे। नेक्स्ट, उस रॉकेट का नाम बताओ जिसको लॉन्च किया गया बाय रशिया फ्रॉम प्लेस्टेक कॉस्मोड्रोम टू डिप्लॉय मिलिट्री सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। तो वो है सोयूज 2.1V रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अभी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया हाई एनर्जी लेजर इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्वेलेंस सिस्टम हीलियोस को, करेक्ट। पूछा जा रहा है ये जो हीलियो सिस्टम है इसको डेवलप किया गया किसके द्वारा? लॉकहीड मार्टिन के द्वारा। नेक्स्ट, इन फेब स्पिन लॉन्च, ये इन्होंने डेवलप किया एक इनोवेटिव मेथड टू लॉन्च द सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। जैसे क्या है बेसिकली, यहाँ पे ऐसे सैटेलाइट्स को रिवॉल्व किया जाएगा एंड सडनली यहाँ पे इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक पावर्ड काइनेटिक लॉन्च मैकेनिज्म है, जिससे इसको काइनेटिक एनर्जी या फिर हम बोले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से इसको एकदम काफ़ी स्पीड में रोटेट करके ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा एंड फर्दर ऊपर जाके एक पॉइंट पे ये अपनी इंजन को फ्यूल को ऑन करेगा। काफ़ी इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग वे टू लॉन्च द सैटेलाइट्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने डिलीवर किया अपना लेटेस्ट एंटी टैंक 4 वेपन्स टू द इंडियन आर्म फोर्सेज इन Feb 2025। तो यह है साब AB। नेक्स्ट, इन Feb शेंजू 19 क्रू ऑन चाइनाज टियांगोंग स्पेस स्टेशन सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन एंड रॉकेट फ्यूल को यहाँ पे डेवलप किया गया आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की मदद से। एंड हम जानते हैं ये टियांगोंग स्पेस स्टेशन किसका है? ये चाइना का है एंड शेंजू के 19 के क्रू ने ये किया, तो ऑक्सीजन को यहाँ प्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया 29th न्यू शेफर्ड फ्लाइट को स्टिमुलेटिंग द लूनर ग्रेविटी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो वो है ब्लू ओरिजिन। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, उस ड्रोन कैरियर वॉरशिप का नाम बताओ जिसको कमीशन किया गया बाय ईरान फॉर द फर्स्ट टाइम इनटू द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी ऑन द पर्शियन गल्फ। तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है शाहिद बघेरी। ये है वो ड्रोन कैरियर वॉरशिप। नेक्स्ट, उस क्रायोजेनिक इंजन का नाम बताओ दैट इसरो सक्सेसफुली कैरिड आउट द इग्निशन ट्रायल उसके अपर स्टेज ऑफ लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का इन Feb 2025। तो क्या नाम रहेगा उसका? CE-20। नेक्स्ट, अभी आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने कोलैबोरेट किया CNSA के साथ ताकि पाकिस्तान की पहली लूनर रोवर को भेजा जा सके इन द चैंग-ईज 8 मिशन, जो कि 2028 में लॉन्च किया गया। तो पाकिस्तान की ये रिसर्च या फिर पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी रहेगी, राइट। तो ये है द स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन ऑफ पाकिस्तान।
नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने अभी कोलैबोरेट किया इसरो के इनर्शियल सिस्टम यूनिट के साथ ताकि सेमीकंडक्टर चिप को डिज़ाइन किया जा सके, जिसका नाम है आयरिस। ये आप उसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पे। तो वो कौन सा आईआईटी है? वो है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, अभी फैल्कन 9 स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट ने लॉन्च किया बैच ऑफ 21 स्टारलिंक सैटेलाइट्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है इन एक्सपेंडिंग द सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क। और स्टारलिंक ने ही इंडिया में एयरटेल एंड जियो के साथ पार्टनर किया ताकि अफोर्डेबल इंटरनेट सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा सके। एंड बेसिक अफोर्डेबल तो नहीं होगा, कहने की बात है, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस यहाँ प्रोवाइड कराने का ये काम करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 40,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स यहाँ पे डिलीवर की जाएंगी इंडियन आर्मी को। ये जो राइफल्स हैं ये कहाँ बनाई जा रही हैं? ये बनाई जा रही हैं कौरवा ऑर्डेंस फैक्ट्री में। ये कहाँ पर है? ये है अमेठी में, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ टू डेवलप हाई स्ट्रेंथ हाई टफनेस स्पेशल ग्रेड स्टील MDN 100 को फॉर एरोस्पेस एप्लीकेशन? तो वो है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। नेक्स्ट, इंडियन शिप डिज़ाइन फर्म, इन्होंने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिज़ाइन किया एंड बिल्ड किया इंडियन नेवी का 8वां मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था? तो यह है नेशनल, इसका आंसर होगा इंडियन शिपिंग, इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग। इन्होंने अभी रिसेंटली डिज़ाइन किया है इस MCA बार्ज को। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने डेवलप किया एंड टेस्ट किया 4th जनरेशन डीप ओशन सबमर्सिबल मत्स्य 6000 को अंडर द समुद्रयान प्रोजेक्ट इन Feb 2025? तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द स्पेक्ट्रोग्राफ जिसको यूज़ किया गया बाय साइंटिस्ट एट द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी टू डिस्कवर द एक्सोप्लैनेट। ये वो एक्सोप्लैनेट रहेगा। तो क्या वो स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्नोलॉजी है? वो है एडवांस रेडियल वेलोसिटी ऑल स्काई सर्च 2। नेक्स्ट, नेम द न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसको लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा थ्रू लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट इनटू द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट ताकि रिप्लेस किया जा सके चाइना सेट 10 को। तो चाइना सेट 10 को रिप्लेस करेगा चाइना सेट 10R। नेक्स्ट, किस मिशन डाटा को अभी यूज़ किया गया टू जनरेट द फर्स्ट एवर डिटेल जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून साउथ पोल? तो चंद्रयान 3 इंडिया का मिशन है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके डाटा को यूज़ किया गया ताकि एक जियोलॉजिकल मैप, काफ़ी डिटेल जियोलॉजिकल मैप को डेवलप किया जा सके ऑफ द मून साउथ पोल। नेक्स्ट, रिसेंटली ऑफिशियल लोगो एंड मैस्कॉट ऑफ 23वें नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभी अनवेल किए गए चेन्नई तमिलनाडु में। उस एनिमल का नेम बताओ जिसको सेलेक्ट किया गया एज द मैस्कॉट फॉर चैंपियनशिप 2025। राइट, तो यहाँ पे मैस्कॉट क्या रहेगा? एलिफेंट यहाँ पे मैस्कॉट रहेगा। 17 से 20 फरवरी तक ये इवेंट हुआ था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। राइट, एंड 1700 से भी ज़्यादा पैरा एथलीट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था एंड एलिफेंट यहाँ पे मैस्कॉट रहेगा। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी सेकेंड एडिशन ऑफ द ICC अंडर-19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम? साउथ अफ्रीका को हरा के फाइनल इवेंट हुआ था मलेशिया में। करेक्ट, तो कौन सी कंट्री है वो है हमारी कंट्री इंडिया। इंडिया की अंडर-19 वीमेंस T20 वीमेंस टीम ने, क्रिकेट टीम ने यहाँ पे ICC सेकेंड एडिशन ऑफ द ICC अंडर-19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया फॉर द सेकेंड टाइम। नेक्स्ट, किन्होंने अभी 87th टाटा स्टील चेस मास्टर ट्रॉफी को जीता बाय डिफीटिंग वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 डी ग्रुकेश हेल्ड इन नीदरलैंड? तो वो है R प्रगनंदा। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये वो पहले इंडियन चेस प्लेयर बने आफ्टर विश्वनाथ आनंद जो 2006 में जिन्होंने टाटा स्टील मास्टर्स को जीता था, एंड अब ये सेकेंड इंडियन बन गए। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इंडियन प्लेयर जिन्होंने अनाउंस की अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट एंड इनका जो फाइनल अपीयरेंस थी रणजी ट्रॉफी में थी वेस्ट बंगाल के लिए अगेंस्ट पंजाब। ये है वृद्धमान शाह। नेक्स्ट, किस टीम ने अभी रिसेंटली जीता फर्स्ट एवर टाइटल ऑफ द मेंस हॉकी इंडिया लीग, जो कि कहाँ पर? ओडिशा में हुई एंड हैदराबाद तूफान्स को इन्होंने फाइनल में हराया। तो सराची राह बंगाल टाइगर्स, इन्होंने हैदराबाद तूफान्स को फाइनल्स में हराया टू वन द फर्स्ट एवर मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024 टाइटल। जो 24-25 टाइटल, लोकेशन क्या थी जहाँ पे ये हुआ था? ओडिशा में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं सिमोना हेल्प। ये 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन है एंड फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 है जिन्होंने अभी अपनी अनाउंसमेंट कर दी रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं? ये रोमानिया को रिप्रेजेंट करती हैं एंड 2017 में ये टेनिस की वीमेन रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन इन्होंने सिक्योर की थी। नेक्स्ट, इन फेब मार्सेलो वियरा द सिल्वा जूनियर, इनको मार्सेलो के नाम से जाना जाता है। ये फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं, रियल मैड्रिड क्लब के लिए खेलते हैं। किस कंट्रीज के बिलोंग करते हैं? ब्राज़ील से ये बिलोंग करते हैं, ब्राज़ील के ये डिफेंडर हैं।
नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी टॉप किया मेडल टैली में 2025 के पैरा आर्चरी एशिया कप बैंकॉक थाईलैंड में बाय विनिंग 6 गोल्ड मेडल्स? तो हमारी कंट्री इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया है मेडल टैली में, टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट, किन्होंने जीता अभी वर्ल्ड सिंगल्स टाइटल एट द 4th एडिशन ऑफ द मुंबई ओपन WTA 125 इवेंट जो कि मुंबई में हुआ बाय डिफीटिंग मनाचया, राइट? तो किन्होंने जीता? जिल बेलेन टेकमैन ने। नेक्स्ट, नेम द फॉर्मर श्रीलंकन कैप्टन जिन्होंने अनाउंस कर दी रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, राइट, इन फेब। तो कौन है वो जिन्होंने अनाउंस की रिटायरमेंट? वो है दिमुथ करुणारत्ने। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वन द मैन सिंगल टाइटल एट द 5th एडिशन ऑफ द चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर जो कि चेन्नई तमिलनाडु में हुआ 3 से 9 फरवरी तक, राइट? तो किन्होंने मैन सिंगल टाइटल यहाँ पे जीत लिया है? कौन है वो प्लेयर? किरियन जैक्वेट। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने टॉप किया मेडल टैली में एट द 9th एशियन विंटर गेम्स हेल्ड इन हर्बिन चाइना 7 से 14 फरवरी तक, राइट? तो कौन सी कंट्री रहेगी? वो है चाइना, टेक अ नोट ऑफ इट, राइट? ये आपके 9वें एशियन विंटर गेम्स रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी 4था एडिशन जीता बैडमिंटन एशिया मिक्स टेनिस मिक्स टीम चैंपियनशिप का बाय डिफीटिंग चाइना इन द फाइनल्स, राइट? तो किस कंट्री ने जीता यहाँ पे बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप को? तो इंडोनेशिया के द्वारा यहाँ पे इसको जीता गया, राइट, बाय डिफीटिंग चाइना इन द फाइनल्स। 3-1 से इन्होंने इनको हराया। नेक्स्ट, व्हेन विल द इनॉग्रल ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स टेक प्लेस इन रियाद सऊदी अरेबिया जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा 11 फरवरी 2025 को अनाउंस किया गया था। हमने देखा था कि 2027 में ये ई स्पोर्ट्स के आपके ओलंपिक गेम्स हमें देखने को मिलेंगे, इनॉग्रल ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द 38th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है कि महाराष्ट्र ने यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया, तो नहीं, महाराष्ट्र नहीं, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ पे टॉप किया विद 121 मेडल्स। महाराष्ट्र की सेकंड पोजीशन थी यहाँ पे इस मेडल टैली में, राइट? तो ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक रहेगा। नेक्स्ट, हु वन द मेंस टाइटल एट द 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जो कि कतर में हुआ बाय डिफीटेड अमीर सरकोश? तो पंकज आडवाणी ने यहाँ पे एशियन स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने टॉप किया मेडल टैली में बाय सिक्योरिंग 5 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज एट द 2025 के आर्चरी एशिया कप वर्ल्ड बैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द एडहॉक कमिटी फॉर्म्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन टू रिप्लेस द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑन 24 फेब? तो मधुकांत पाठक, राइट? इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द एडहॉक कमिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द फुटबॉल क्लब दैट रिसेंटली वन द लीग विनर शील्ड एट द 24-25 इंडियन सुपर लीग, राइट? तो ये है मोहन बगान सुपर जायंट कोलकाता। ये वो फुटबॉल क्लब है जिन्होंने लीग विनर शील्ड को जीत लिया है, टेक अ नोट ऑफ दिस। आवर होमवर्क सेक्शन फर्स्ट इज विच स्टेट विल बी रीनेमिंग द, और लेट मी गिव यू, कर्नाटका will be renaming the Bengaluru City University after whom to honor him? Second question, recently Ajay Devgan, right, the famous actor, he released a AI driven media company. What is the name of that company? Third question, recently Swalambhini, what is this Swalambhini, who launched it and what is the initiative, why this Swalambhini was launched? Correct. Next, fourth question, tell me recently which is the 58th tiger reserve of India and 9th tiger reserve of Madhya Pradesh? And fifth question, students, recently a satellite was launched by Assam state, right? What will be the name of that satellite that will be launched by Assam? Name that satellite, correct? So these are your 5 homework questions, students. I need maximum to maximum participation from all the students in this video.